Good morning, everyone. Today we are going to start chapter 1, that is basic elements of nanoscience and nanotechnology of the subject that is nanotechnology and surface engineering. Okay, so first question comes here, what is nano and what is nanotechnology? Okay, जो आपका सब्जेक्ट है that means nanotechnology and surface engineering. उसमें पहली तो एक टर्म आ रही है नैनो और सेकंड टर्म आ रही है नैनो टेक्नोलॉजी. Okay, so what does it mean? What is the meaning of nano? Nano means very small in size. Okay, and nanotechnology is the science and engineering of small things, in particular things that are less than 100 nanometers in size. Nanotechnology जो है that is the science and engineering of small things. Small things यानी कि कौन सी रेंज हम बता रहे हैं जिनकी जो साइज है 100 नैनोमीटर से भी लेस है. और नैनो क्या है? नैनो दैट इज अ प्रीफिक्स एंड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर dwarf nanos. 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 9 meter or about 3 atoms long. At first, it can be hard to comprehend the nanoscale because it is so much smaller than our everyday experience. While we know intuitively that a coin is smaller than a basketball, and even that a red blood cell, which can be observed in the light microscope, is smaller than a marble, we have no experience with objects that are billions, 10 raised to power minus 9 of a meter, 1 nanometer in length. When was the last time you put your hand around a strand of DNA, that उसकी size होती है 2.5 nanometer, or measure the diameter of a flu virus, that is 100 nanometer? Here are a few comparisons to help understand how small a nanometer is. An average human hair is about 60,000 to 1 lakh nanometers wide. Your fingernail grows a nanometer every second. A sheet of paper is about 1 lakh nanometers thick. In 1 inch, there are 2 crore 54 lakh nanometers. तो ये जो एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं इनसे आपको एक स्मॉल आइडिया मिलता है कि नैनोमीटर जो हम बात कर रहे हैं, जो नैनो स्केल की जो हम बात कर रहे हैं, वो कितनी कितनी स्मॉल रेंज की हम बात कर रहे हैं. ओके, यहाँ 3 रेंज आपको दी हुई है, मैक्रो, माइक्रो, नैनो. मैक्रो के अंदर पर्सन है, एप्पल है, एंट है. माइक्रो ह्यूमन हेयर की रेंज जो है वो माइक्रो में आती है. स्मॉलेस्ट आई कैन सी दैट कम्स इनटू द रेंज ऑफ माइक्रो. इक्वली बैक्टीरिया दैट कम्स इनटू द रेंज ऑफ माइक्रो और नैनोमीटर. नैनो जिसमें सेल्यूलर नैनोफिल्स, डीएनए, हाइड्रोजन एटम, ये रेंज आती है हमारी नैनो की. नैनो टेक्नोलॉजी इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक टर्म होती है नैनो साइंस और एक टर्म है हमारी नैनो टेक्नोलॉजी. ओके, जो आपके चैप्टर का नाम जो है बेसिक एलिमेंट्स और नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, इस नाम में आपको 2 टर्म दिख रही है, दैट इज नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो साइंस क्या है? Where researchers learn about the chemical and physical properties of materials at the nanoscale. Materials at 1 to 100 nanometer are called nanostructures. They are the smallest things that can be made. Okay. नैनो साइंस में रिसर्चर्स क्या काम करते हैं? जो नैनो स्केल रेंज के जो मटेरियल्स हैं उनके बारे में रिसर्च करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को. ओके, एंड व्हाट इज मीन नैनो टेक्नोलॉजी? Where researchers develop and apply materials at this scale to develop new products or methods, that is turning nanostructures into usable tools and applications. नैनो टेक्नोलॉजी में रिसर्चर्स क्या काम कर रहे हैं? जो नैनो मटेरियल्स है उसको यूजेबल टूल में कन्वर्ट कर रहे हैं. किस तरीके से? तो नैनो साइंस में क्या हुआ, हमने उसके बारे में पढ़ा, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा. ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? उन मटेरियल्स को यूज में ले रहे हैं कि हाउ कैन वी यूज दीज मटेरियल्स. ओके, so that is the difference between nanoscience and nanotechnology. Nanotechnology deals with various structures of matter having dimensions of the order of a billionth of a meter. From the advent of nanotechnology, people realized that certain materials can exhibit different properties based on its size and shape. It all started after the famous lecture, There is a Plenty of Room at the Bottom, given by Richard Feynman on December 29, 1959. Nanomaterials are intermediate between macroscopic solid and of atomic and molecular systems. इतना रिसर्च कब शुरू हुआ? नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नैनो मटेरियल को लेकर के इतना रिसर्च कब शुरू हुआ? आफ्टर द famous lecture that was given by
रिचर्ड फैमन, उन्होंने एक लेक्चर में बोला था, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। तो ये जो सेंटेंस है, इससे स्टार्ट हुआ नैनो मटेरियल्स का रिसर्च कि अपन हम किस तरीके से नैनो मटेरियल्स को यूज ले सकते हैं। When the dimension of a material is reduced from a large size, the properties remain the same at first. Then small changes occur until finally when the size drops below 100 nanometer. आपके पास बल्क मटेरियल है, जब आप उसको स्मॉल साइज में कन्वर्ट करते हो तो देयर विल बी वेरी स्मॉल चेंजेस इन देयर प्रॉपर्टीज। ओके, फिर जब धीरे 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 करके आप उसको जब नैनोमीटर की रेंज में लेकर आते हो तो देयर विल बी द ड्रास्टिक चेंज इन देयर प्रॉपर्टी। Okay, if only one dimension of a three-dimensional nanostructure is of nanoscale, the structure is referred to as a quantum well. Again repeating, if only one dimension of a three-dimensional nanostructure is of nanoscale. थ्री डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर में अगर सिर्फ एक डायमेंशन नैनो स्केल की है तो वो स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं, उसे क्वांटम वेल। अगर दो डायमेंशन नैनोमीटर रेंज की है तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द क्वांटम वायर। और अगर तीनों डायमेंशन नैनो स्केल रेंज की है देन दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्वांटम डॉट। तो तीन टर्म हमने यहाँ पढ़ी, क्वांटम वेल, क्वांटम वायर एंड क्वांटम डॉट। अगर सिर्फ एक डायमेंशन नैनो स्केल की तो क्वांटम वेल, अगर दो तो क्वांटम वायर, अगर सारी तो क्वांटम डॉट। Hence, the quantum dot has all three dimensions in the nano range and it is the ultimate example of nanomaterials. The word quantum is associated with these three types of nanostructures because changes in properties arise from the physics of quantum mechanics. हमने कहा जब हम नैनोमीटर की रेंज में लेकर आते हैं, कोई बड़े मटेरियल को छोटा करते हैं, जब नैनोमीटर की रेंज में लेकर आते हैं तब उसकी प्रॉपर्टीज में जो है वो चेंज आता है। ठीक है, चेंज इन प्रॉपर्टीज जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है। इसलिए जब हम नैनो मटेरियल की बात कर रहे हैं, नैनो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जब हम क्वांटम, तो हमने एक टर्म यूज में ली क्वांटम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रही है। क्वांटम वेल, क्वांटम वायर एंड क्वांटम डॉट। एंड क्वांटम डॉट इज द ultimate example because all the three dimensions are in nano range. Okay. Now the interest in synthesis of nanomaterial has grown because of their distinct optical, magnetic, electronic, mechanical and chemical properties compared with those of bulk materials. Okay. क्यों इनके सिंथेसिस का हमें क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू द बल्क मटेरियल। ये इटसेल्फ एक नई फॉर्म में आपके सामने आता है। ओके, तो स्टूडेंट, दिस वाज अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द नैनो मटेरियल कि हमने यहाँ पढ़ा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैनो टर्म, व्हाट इज नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्यों हमें जरूरत पड़ रही है नैनो मटेरियल के बारे में रिसर्च करने की, क्यों हम पढ़ रहे हैं नैनो मटेरियल। ओके, सो ऑल दीज वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, so thank you everyone.